Hello children, I hope you all are studying well. So children, do you remember कि हमने जब food preservation का chapter किया था, we had spoken about a very important people behind the getting the food to our tables. Who are these people? They are the farmers. They are very important for us because they are the ones who produce the food, okay, that we eat. Alright, so let's talk about farmers and farming. Okay, so I know farmers grow dash in fields and farmers lived in dash. Okay, so you have to tell us what do they grow in their fields and वो कहाँ रहते हैं. So most of the food that we eat is grown and produced by farmers in the fields. They work very hard to grow crops. Okay, agriculture is their main occupation. About 70% of population of our country lives in villages and depends on farming for their livelihood. So बच्चों करीबन 70% लोग जो है अपने देश के वो रहते हैं गांव में, अलग अलग गांव में रहते हैं and their profession, okay, और their main occupation क्या है? Farming. वो अलग अलग चीज़ें हमारे लिए ग्रो करते हैं in the form of crops and then we get our food that we eat. Okay, so let's talk about the different types of farmers in Bharat. Depending on the size of farmlands owned by farmers, we can categorize them into three types. Okay, तीन टाइप के farmers होते हैं. एक होते हैं big farmers, दूसरे होते हैं middle level farmers और तीसरे होते हैं small farmers. So big farmers कौन होते हैं? जिनके पास बड़े बड़े farmlands होते हैं, बड़े बड़े fields होते हैं. Okay, so big farmers also own tractors. They have modern machinery to help them carry out all kinds of agricultural activities such as plowing the field, sowing seeds and irrigation. The big farmers often employ agricultural laborers to work in their field. So ये farmers जो होते हैं, बड़े farmers के पास बहुत सारा land होता है जहाँ पे वो crops grow करते हैं. They can keep, they have all the modern equipment, सारे modern technology होती है, modern equipments होते हैं, tractors होते हैं, उनके पास उनके लिए काम करने वाले लोग होते हैं. Okay, special agricultural laborers होते हैं. Alright. So दूसरे आते हैं middle level farmers. Middle level farmers कौन होते हैं? They have small plots of farmland which they cultivate on their own. They are also called marginal farmers. Okay, such farmers जो होते हैं, ऐसे वाले farmers generally work with their family members. Okay, he or she may not have the modern agricultural machinery and may use the traditional means to carry out the agricultural activities. तो ये middle level farmers जो होते हैं वो generally वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करते हैं इन द फार्मिंग प्रोसेस एंड दे मे नॉट हैव सो मच मनी टू हैव ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड ट्रैक्टर वगैरह लेने के लिए इतने पैसे उनके पास नहीं होते. ओके, तो बट दे डू कैरी आउट द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग. तीसरे होते हैं स्मॉल फार्मर्स. अब स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं? दे वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ अदर फार्मर्स फॉर डेली वेजेस और टेक पीसेस ऑफ लैंड ऑन रेंट. They mainly get work during the sowing of seeds and at harvest time. For the rest of the year, they work as casual laborers in construction site as there is no work in the fields. They are also called tenant farmers. So ये small farmers जो होते हैं वो उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपना खुद का लैंड खरीद सके. तो वो क्या करते हैं, लैंड भाड़े पे लेते थे या फिर वो क्या करते हैं, दूसरों के फार्म्स पे काम करते. ओके, अब इनका मेन काम होता है जब सोइंग ऑफ सीड्स, जब सीड्स को सो करना होता है या फिर हार्वेस्ट टाइम पे जब उनको जो क्रॉप होता है उसको कट करना होता है. सो दैट इज़ द टाइम व्हेन दे वर्क. और बाकी टाइम में वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेबरर का काम करते हैं या कहीं और ड्राइवर का काम करेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे विच डज नॉट इन्वॉल्व फार्मिंग. ओके, सो नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स? So basic requirements for growing crops are: first, seeds of good quality are required for the high yields of crops. So अच्छे quality के seeds ज़रूरी है.
suitable climatic conditions. While different crops grow in different seasons, we divide them into two categories. Okay, अलग अलग season के हिसाब से crops grow होते हैं, they are called seasonal crops. Okay, so इसको दो category में divide करते हैं. First is Rabi, which is grown in winter season, and second is Kharif, which is grown in rainy season. Okay, so proper irrigation facility is also required for the growth of crops. Some tools like sickle, harrow, trowel, seed drill, sprayer, thresher, harvester, etc. are used for growing crops. You can see the pictures of all these different tools that are being used for the growing of crops. Okay, then there are manures and fertilizers to replenish the soil with nutrients, जिसकी वजह से soil को जितनी ज़रूरत है उतने nutrients मिलते हैं. Okay, lack of sufficient nutrients can affect its growth and yield. ओके जैसे हमें ज़रूरत होती है खाने की टू ग्रो वेल, वैसे ही क्रॉप्स को ज़रूरत होती है फर्टिलाइजर्स की, मैन्यूअर्स की, सो दैट दे ग्रो वेल. ओके, एंड दे आर हेल्दी क्रॉप्स. Pesticides and insecticides are sprayed on plants to protect them from pests and insects. Okay, तो जैसे हमें बीमारियों से दूर भगाने के लिए मेडिसिन चाहिए, वैसे ही टू गेट रिड ऑफ दीज इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट्स, what they need is insecticides and pesticides. Alright, so now let's look at the crop production. Crop production के different stages क्या होते हैं? Let's look at them. Okay, first is preparation of soil. Soil को prepare करना, फिर उसके बाद sowing of seeds. Okay, फिर fertilizer डालना होता है उसमें, उसके बाद irrigation की process शुरू हो जाती है. Okay, फिर weeding में क्या होता है? जो weeds होते हैं, okay, these weeds are the plants which are not required. Okay, जंगली plants होते हैं वो, उनको हटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्रॉप को ख़राब कर देते. ओके, फिर आता है हार्वेस्टिंग. ओके, हार्वेस्टिंग में वो सारा जो क्रॉप होता है उसको कटिंग कर देते हैं. उसके बाद थ्रेशिंग, तो उसमें थ्रेशिंग के प्रोसेस में ग्रेन्स और ये सेपरेट हो जाते हैं. फिर विनोइंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. ओके, चलो अब हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग. ओके, इट लूजन्स द सॉइल and makes it airy so that the roots are able to penetrate deeper and breathe. Plowing improves the water holding capacity of soil. Plowing is done by a wooden or an iron plow with the help of bullocks. In big fields, it is done by tractors. So, आपने देखा होगा ना, बुलक के पीछे एक चीज़ लगाई रही होती है, उसके साथ वो टूल्स लगते हैं जिसकी वजह से द बुलक्स आर एबल टू प्लो द फील्ड. और प्लोइंग की वजह से फील्ड जो होता है उसका सॉइल जो होता है वो लूजन अप हो जाता है. ओके, सो आफ्टर द प्लोइंग द सॉइल इज लेवल्ड. सॉइल को लेवल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. Okay, this is done to prevent the soil from being eroded by wind and water. ओके, नहीं तो सॉइल बह जाएगा पानी की वजह से या विंड की वजह से. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर यूनिफॉर्मली. ओके, फिर आता है द प्रोसेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स. ओके, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. इट इज आइदर डन बाय हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ अ सीड ड्रिल. The seed sown must be healthy and of good quality. After sowing, a wooden board is drawn over the field to cover the scattered seeds with soil. Okay, तो seeds को लगा देते हैं उन मिट्टी पे और उसके बाद उसको and they ensure that जो भी seeds वो खरीदते हैं वो healthy होने चाहिए and good quality के होने चाहिए. उसके बाद एक wooden board लगा के उनको अच्छे से ढक देते हैं. Okay, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स. उसके बाद मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सो दैट द सॉइल बिकम्स fertile, healthy. Okay, manure is made from animal and plant waste, whereas fertilizers are made from what? Chemicals like nitrogen and potassium. Irrigation के process में क्या होता है? Water is essential for the growth of plants. Okay, the process of watering plants in the field is known as इरिगेशन. जो प्लांट्स को पानी डालते हैं उस प्रोसेस को कहलाया जाता है इरिगेशन का प्रोसेस. ओके, तो द सॉइल हैज टू बी वाटर्ड, इरिगेटेड प्रॉपरली डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप दैट इज बीइंग ग्रोन. टू लिटिल और टू मच वाटर कैन किल द क्रॉप.
आप अपने घर के भी प्लांट्स में जब पानी डालते हो, सो टू मच पानी डालोगे या टू लिटिल पानी डालोगे तो भी वो प्लांट किल हो सकता है. इट कैन नॉट सस्टेन. ओके, इट कैन नॉट स्टे. Weeding. Now, what are weeds? Okay, they are many unwanted plants that grow along with the main crops. Okay, these unwanted plants are known as weeds. Weeds also have to be removed so that they do not choke the plant and take up all the nutrients in the soil. The process of removing weeds is called weeding. Okay, ये weeds जो होते हैं unwanted plants होते हैं, they are not required, they are not a part of the crop. तो उनको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो सारा सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं. इसके लिए वीडिंग का प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स विच कैन कॉज हार्म. ओके, हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द मेच्योर्ड और द राइप क्रॉप्स. जो क्रॉप्स आ जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, उनको कट करने का और गैदर करने का प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग. ओके, द क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड. ओके, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिकल और मशीन्स. फिर आता है द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. Threshing is the process of separating the grains from the harvested crops. It is done with the help of machines or by bullocks trampling upon them. It is also done by spreading the harvested crop on the ground and walking over them. So, ये अलग अलग प्रोसेस है थ्रेशिंग के. जैसे मशीन्स की हेल्प से होता है, बुलक्स को उनके ऊपर चलने को कहते हैं और ट्रैम्पल कर देते हैं, या फिर वो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसको पूरे ग्राउंड पे स्प्रेड करके दे वॉक ओवर इट एंड देन दे सेपरेट इट. ओके, और दे जस्ट बैंग इट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज विनोइंग. विनोइंग इज डन टू सेपरेट द हस्क जो होता है उसको सीड से सेपरेट करने के लिए बाय ड्रॉपिंग देम फ्रॉम अ हाइट. तो ऊपर से उनको नीचे फेंकते तो जो हस्क होता है वो सेपरेट हो जाता है और सीड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. सो सीड्स बीइंग हेवियर दे फॉल ऑन द ग्राउंड व्हाइल द लाइट शाफ्ट फॉल्स सेपरेटली एंड द विंड ब्लोज इट अवे. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. अब ये ग्रेन्स जो मिलते हैं उनको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है. ओके, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स उसको पहले तो धूप में सुखा देते हैं. ओके, दे आर ड्राइड इन द सन. द क्लीन ग्रेन्स आर देन पुट इन गनी बैग्स. ओके, एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोडाउन्स नोन एज ग्रेनरीज. ओके, दे आर ड्राई कूल प्लेसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. ओके, उसके बाद सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैपन. Okay, farmers sell their crops to the wholesalers in the market. Shopkeepers and vendors buy food grains from these wholesale markets. We buy good food from grains. Okay, good food grains from whom? We do the shopping from the shopkeepers, and then the food grains are brought by us at home and are cooked and eaten. This is how we get our food. This is called the journey of food. सो फार्मर्स जो गोडाउन से होलसेल के मार्केट में लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्हें बेच देते हैं और फिर होलसेल मार्केट से वो पहुँच जाता है रिटेल मार्केट में, मतलब शॉपकीपर्स के पास. वहाँ से हम उन्हें खरीदते हैं, घर लाते हैं, उन्हें पका के खाते हैं. दैट इज नोन एज द एंटायर जर्नी ऑफ फूड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. Traditionally, farmers in India grew variety of crops like wheat, rice, sugarcane, millets, oilseeds, tea, coffee, potato, onions, etc. Nowadays, people love to eat a variety of food items. Due to this reason, farmers also start growing special crops such as kiwi, soyabean, quinoa, parsley, broccoli, cherry, etc. Crop diversification is intended to give a wider choice in the production of a variety of crops in a given area so as to expand production, related activities on various crops and also to lessen risk. तो पहले क्या होता था, बहुत specific crops grow करते थे, but as the days have changed, the generations have changed, the requirement for different types of crops has grown. इसकी वजह से अब अलग अलग चीज़ें जो बाहर के देशों से पहले आती थी, अब वो अपने देश में भी ग्रो करनी शुरू हो गई है. ओके, एंड दैट्स हाउ दे हैव एक्सपैंडेड देयर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ बढ़ा दी है, एंड दे हैव गिवन अस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स नाउ इन आवर ओन कंट्री.
Okay, so children, remember, most of the food that we eat is grown and produced by farmers in the fields, big farmers, middle level farmers and small farmers. They are the three types of farmers. The basic requirement for growing crops are seeds, climatic conditions, irrigation, manures and fertilizers, pesticides and insecticides and some tools. Okay, crop production involves different stages. And children, let's look at the word bank. Agriculture. What is agriculture? It is a practice of farming. Irrigation is the supply of water to land or crops. Fertilizers, they are natural or chemical substances that are spread on land to make plants grow better. And granaries are a storehouse of threshed grains. Alright, so children, now I hope you know why farmers are so important in our life, why farming is so important in our life. So children, I hope you can reread this chapter and practice all the things that you have read and respect the farmers at all times, because they indeed, okay, have been like, you know, a major important people in our life. All right, so reread the chapter, do the back exercises and do show good respect and gratitude towards the farmers.